Why? Now who are we? Are we employees of MP or SEBI? Why do we need to put an EIN number? Are we employer of SEBI or MP? Either of them come forward and say, yes, you are our employer. If they agree to it, then are they going to pay? One thing. There's no one on the panel. For 1 minute, for an IRDA agent, even if he doesn't service his customer, he earns his commission. Is there anywhere question whether he sold the right insurance or not? But an MP is going to be asked whether he sold the right product as per the need or not. Is it right? And is MP or SEBI? I'll tell you why we have this problem. I think I will play the role of the teacher. How many of you here are asking about your customer? Every single meet of advisors, you are worried only about your business. Stop doing that. Ask a question about your customers, yeah? Your EIN, my commission, my this, my that. Your business is still there. Now listen, EIN, I don't want to get in a fighting mode here, right? But I'm saying just pause back and ask. If there is a question about your customer, please ask it. You are veterans. You have gone through such a large cycle, and as Hardik was pointing out, we can only deal with what we can control, right? Why are we worried about what we cannot control? And why are we all the time so negative and saying, oh, I would have done my business, but this went wrong. I would have done it. Yes, EIN is a headache. I don't deny one. But the point, the regulator's objective here is to find out that if a customer has been sold, please remember, it is a pain you're taking on behalf of the customer who has been sold a product and who was subsequently not able to track the relationship manager who sold the product. You can't create a regulation where you say bank relationship managers alone will get EIN, IFAs will not get it. I'm not here to argue for or against SEBI. All I'm saying is, as an attitude, I teach meet advisors every time, and the end of the day questions are all about pain points for advisors. And research as well as data shows there have been years when the advisory profession has better margins than EMPs themselves. So what are we cribbing about? Let's start looking at customers. Let's stop asking all these questions and worrying that we are in the wrong business. You're all here because you're in the right business, right? Thank you very much. My name is Vasudevan. Yes, of course, this last question I'm being told. My question is to Sadiq. You specifically said, stop being an agent and start becoming an advisor, okay? Fantastic. That's a good option to be in. I'm a certified financial planner. In fact, I went ahead and canceled my certification. Okay? This is because of the state that we are in. FPSB India is not promoting CFP. Every other person that I shake hands with and say that I'm a certified financial planner, the immediate question that he is asking me is, do you sell insurance? This is the poor state of, the kind of FPSB which is there in 22 other countries, and it's been there in India for such a long time. If a certified financial planner does not get recognized as to what he is worth for, then, how am I going to project myself and differentiate from the crowd? And what is it that you're going to do about it, Sadiq? Because I know that, you're promoting financial planning big time. What is it that you're going to do and you're doing already so that, thank you very much. Thank you for asking this question specifically to me. All right, I'm a certified financial planner myself, and I'm proud about it. Okay, and just as a disclosure, I was associated with Financial Planning Standards Board India. That was my first job, and I'm thankful that I got that as my first job. I learned a lot of things, and I got a lot of exposure, and whatever I'm doing today has been, the exposure which I got at FPSB India. But now, as I stand today with Network FC, I really, once again, I go back to my first statement, that is something which is beyond my control. And I'm doing something which is in my control and trying to promote and give education to the financial advisors. So I really do not want to talk about FPSB India per se. All right. And one thing regarding the CSP certification, yes, I do agree that it has to be promoted and kind of marketed, and consumers need to be made aware about it. But at the same time, nothing is stopping us to promote it ourselves. There is n number of financial planners, certified financial planners who are going out, who are really not depending on FPSB India to promote their profession and CSP certification.
Examples being, there's a Federation of Financial Planners here in Hyderabad, there's a SOFP, Society of Financial Planners in Mumbai, there's FPGI, Financial Planners Guild of India, n number of these COFP from Bangalore, Council of Financial Planners. They are doing it themselves. They are not depending. They have stopped worrying about things which are beyond their control. They are doing it themselves. And regarding how I can promote myself and how I used to promote CFP certification without depending on FCSB India is very simple. To give you an example, how many of you are CFP certificates here? Great. Wow. Okay, I used to promote, I also believe that it is up to me how I showcase my certification. At the end of the day, I think we have to promote our credentials. Okay? This is the typical pitch which I have to give to my clients or prospects. There are 1 lakh CSP certificates in the world, out of which 1,500 CSP certificates are there in India, out of which 700 are actually practitioners. The remaining 700 are, in the banks, employed in the banks. Out of 700, maybe around 300 are actually practicing certified financial planners. Out of 300, there are 20 or 50 in Mumbai, and I am one of them. From 1 lakh to 1. Don't you think out of that 40, 50 in Mumbai, such a big city like Mumbai, one of them, and show them the directory, show them the ethics which we follow. Although yes, we do not it is not really enforced upon us, but yes, we can always showcase what we are doing or what we comply with. And I am very confident that I am complying with those ethics, irrespective of whether FCSB India is enforcing that on me or not. So I think I take the onus of promoting my certification, which I am very proud about, on myself, not really on the regulator or the FCSB India. Thank you. A big round of thanks to all the panelists. It was surely a very, very informative, with a lot of food for thought for all the advisors. I'm sure the time they have spent coming here to this forum, to this program, has been I'm very sorry. Thank you. See, Dhirendra, there's a question to you, sir. We spoke about behavioral aspects of investor psyche. I think, hats off to you for the wonderful work that you have done in promoting value research and making investors as well as advisors conscious about tracking fund performance. But we also realize when you present fund performance in the last 1 week, last 1 month, 1 quarter, 6 months, and 1 year, and so on, it gives a rate of fund which is less than 3 years old. A fund which is older, 10 years, 5 years, 3 years, we do the weighting in a manner that they tend to benefit because consistent superior performance on a risk-adjusted basis over a longer period of time gets superior acknowledgement. So certainly our qualitative framework is there. Yes, at a certain level, we are in the business of selling data as well, which is processed and which is understood or validated or verified, which people trust. So in that sense, our data actually goes there as an input to a lot of things. But that doesn't mean that if you look at 15-day performance, you should be driven by that. And there is a set of funds where it can well be a driver. I would say that there is no harm in calculating even 1-day return. Should you be guided by that? I don't think so. So, you can be choosy in what you choose. In fact, the other day, I'll tell you, the highest number of traffic, the number of people who visit value research online is between 9:30 and midnight, because that is the time when the NAVs get updated. And most corporate treasuries and everybody tries to, hit the same page with the portfolio set up. With the selection of liquid fund, they just want to see 1-day return. But should they be actually guided by 1-day return? No. Should they be curious? Yes, of course. I'm very sure. Thank you for the idea. I'll certainly be taking it back. मैं कुछ डाटाज आपके सामने एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। 2000 से पहले एनएफओ का चलन बहुत ज़्यादा नहीं था। 2000 में जो पोर्टफोलियो क्रिएट हुए थे, डेफिनेटली आईटी सेक्टर का पोर्टफोलियो आया था, लेकिन बहुत सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी एग्जिस्ट थे। उसमें एक्सपोजर आईटी सेक्टर का लिया गया था। क्या ये भी जो सेल किया गया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स को, वो भी आई को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है? पहला क्वेश्चन प्लीज।
try to understand. We have 3 questions simultaneously with the relevant questions. You ask और reply accordingly. थोड़ा जल्दी करिए. जी जी, एक तो ये हो गया. दूसरा, जो 5 साल का हमारे ब्रदर ने कहा था, मैं आपको 1993 से लेकर आज तक बताता हूँ, जब भी सेविंग्स होती हैं वो हमेशा पार्टिकुलर सेगमेंट के साथ आती हैं. अगले 10 वर्षों तक वो सेगमेंट दोबारा वापस नहीं आता, नया सेगमेंट चालू होता है, नई कहानियां रची जाती हैं और वो जो सेक्टर का सेल किया जाता है जिसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, तो अगले 10-15 सालों तक एट पार पे वापस कभी नहीं आता. 1993 में हमारा FMCG चलता था, 2000 में IT आया, 2000 में इंफ्रास्ट्रक्चर आया. 1993 का जो हमारा इन्वेस्टमेंट था FMCG का, वो 2008 में जाकर एट पार हुआ. हिंदुस्तान लीवर में 3000 चलता था, 10 रुपए में तोड़ा गया, 300 रुपए का हुआ, अभी 300 रुपए क्रॉस किया है. 2000 में IT सेक्टर का इंडेक्स 95,000 था, उसको 10 में भागा दिया गया तो 9,500 आया. अभी भी 9,500 IT सेक्टर का नहीं आया. पर इवन टुडे आफ्टर 13 ईयर्स IT के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर 2007 में बेचा गया, मोस्ट इन्वेस्टमेंट 2008 में हुआ और उसके बाद तो अगले 15 सालों 10 साल में आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, एवरीबडी नो, डजंट नो. प्लीज इसके पीछे समझे. दूसरा, रेगुलेटरी का मामला है तो उसके बारे में हेल्प कर सकूंगा, आप जितना क्वार्ट उनसे जवाब दीजिएगा. आप लोगों ने ये देखा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कि आने वाले दिनों एडवाइजरशिप जो है, कंसल्टेंसी जो है, वो प्रोफेशनल बेस होने जा रही है. MBA CA इज लाइकली कुछ डिग्रीज होनी चाहिए. एक बैंकिंग सेक्टर, एक इंटरप्राइजेस जो है वो एक CA के द्वारा पूरे देश के ब्रांचेज में सेल कर सकता है. एक इंडिविजुअल IFS उसको भी सेम डिग्री चाहिए अकेले को बेचने के लिए. हाउ इट इज पार, प्लीज ट्राई टू रिप्लाई. नहीं, आपका तीनों सवाल का मैं क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, तो मैं एक ही जवाब दे दूंगी. ठीक है, ओके ओके. मैं यही कहती हूँ कि अभी तक जो भी हुआ है, अभी तक नहीं, पिछले कुछ सालों से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हुआ है तो सेल्स के हिसाब से हुआ था. इज इट राइट? एक मिनट मैं फिनिश करूं, उसके बाद आप सवाल पूछिए. जो भी प्रोड्यूसर है, मैं AMCs की तरफ से, ना मैं कोई AMC के एम्प्लॉय हूं, ना मैं कोई एडवाइजर हूं, ना मेरे पास आपके पास बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट है. मैं बस आई एम ओनली टॉकिंग टू यू एज ए टीचर. तो जो भी प्रैक्टिस है, हर प्रैक्टिस आप निकालेंगे तो अभी फॉर्चुनेटली पिछले 25 ईयर्स का हिस्ट्री है मेरे, तो आप कोई भी एक्सटेंशन देंगे तो उसका मैं दूसरा इंस्टेंस आपको बता सकती हूँ. और जो भी आपने एग्जाम्पल दिया उसका मैं और एग्जाम्पल भी आपको बता सकती हूँ. तो इसमें हम नहीं जाते हैं. फिर मैं ये कहती हूँ कि अब तक जो इंडस्ट्री चलता आया या जो भी एडवाइजरी चलता आया वो सेल्स के हिसाब से चलता आया. ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं. उसको हम अगर रोकना चाहेंगे तो द पॉइंट रियली इज दैट देयर इज अ प्रोड्यूसर जो है उनका धर्म है. अभी आप वो कॉर्नर शॉप में जाके देखेंगे तो उड़पी होटल लिखा होता है, उसके नीचे पंजाबी, इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन और 25 तरीके का डोसा आपको मिलेगा. आप जाके उनको नहीं कह सकते कि आपने ये शेजवान डोसा का फिलिंग क्यों दिया है. उनका धर्म है, वो प्रोडक्ट लेके आएंगे, जो बिकता है उसको वो देखकर ही आएंगे. आपका धर्म है उनके और कस्टमर के बीच में खड़े होना और कस्टमर के लिए खड़ा होना. वो काम में आप 1000 आप सफाई दे दीजिए, आप नाकाम रहे. 1000 सफाई आप दे दीजिए. आपका धर्म है कस्टमर के लिए खड़ा होना और आपका ये धर्म है कि वहां खड़े होकर जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, फंड मैनेजर से पूछना, ये जो फंड आपने दिया था इसका काम ये था और ये काम ये हुआ था. कोई टेक्नोलॉजी फंड था जिसमें हिंदुस्तान लीवर का शेयर भी था, आपने पूछा नहीं ना? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टूड अप एंड आस्क्ड क्वेश्चंस to the fund manager with preparation which tells you what is the risk in the portfolio? आप सफाई मत दीजिए. हैंड ऑन योर हार्ट, आई एम ओनली सेइंग कि आपने वो होना चाहिए, वो जोश, वो क्वालिफिकेशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपका रोल है. वो होना चाहिए कि
आप अपने आप को वो एएमसी की डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट जो भी है वो क्यों समझते हैं? आप तो फंड मैनेजर से ऊपर हो, क्योंकि फंड मैनेजर सिर्फ प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और सिर्फ मार्केट के साथ जो रिटर्न है, रिलेटिव रिटर्न, वो सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। इन्वेस्टर को अगर एब्सोल्यूट रिटर्न चाहिए, वो देने वाले आप हैं, वो सिर्फ आप दे सकते हो, तो उनके ऊपर है आप। तो आप खड़े होके अगर फंड मैनेजर को कहेंगे कि ये जो फंड है ये मेरे लिए काम नहीं करता है, क्योंकि आपने कहा ये लार्ज कैप फंड है पर इसमें आपने स्मॉल कैप शेयर डाल दिए हैं। आजकल आप अभी तक क्या कहते आए हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है, आप कहा करते हो कुछ भी कर लीजिए आप, पर रिटर्न दे दीजिए। करेक्ट? नो, आई एम ओनली सेइंग अगर आप उस लेवल पे तैयार हो जाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट की जो मिस सेलिंग है वो अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं बेचेंगे। आप तो प्रोडक्ट की पूरी सुनवाई करने के बाद ये पूछ रहे हैं प्राइसिंग क्या है। आप ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में मैं भी होती थी, तो एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन सवाल क्या आता है, अच्छा ये सब मैडम ने जो सिखाया वो सब ठीक है पर प्राइसिंग क्या है? किसी ने बताया मुझे पिछले एक सेमिनार में, बहुत ही मार्केट में मतलब मार्केट में बहुत बदलाव आ गया है, क्योंकि आजकल एडवाइस में चेंज आ गया है, इन्वेस्टर मैच्योर हो गए हैं, इक्विटी मार्केट जब गिर रहा है इन्वेस्टर बेट लेने लगे हैं, समझदार हो गए हैं। क्या मुझे नहीं मालूम है प्राइसिंग में क्या चेंज हुई है? हाँ, तो आप उस बात पे मत छिड़े। मैं बस इतना ही कहूंगी, जो भी आपने सवाल पूछा है उसका सीधा सा जवाब ये है